are live. Hey guys, welcome to another great AMA, of DMP. And I know we are back after a long time, and this time we are back with a bang. This whole month is going to be crazy valuable for all of you who are going to attend, who are going to see the recordings. So today we have someone who is one underrated, but he is a beast. Okay, so I would name him that if I have to term him, him. Uh, he is the founder of DGRIs, which is a digital marketing agency and a training institution. Catering to clients, in growing their business online and also educating a lot of people on how they can start their journey online. So welcome Nawal Gupta, the infamous entrepreneur, great freelancer, and one of the you're an inspiration for a lot of people. I've seen a lot of people following you for good, and you've always stood up for good and ethical marketing. That's how I see you as. You're a gem in the industry, and we are so much grateful that we have you today in DMP as well. So thank you so much for accepting the invite, and welcome once again. Thank you so much, Karan. After like 1 year of procrastination, I think, and like 10 minutes of issue, we are like finally live. So kuch karte hain. And thank you so much for your kind words. Welcome, bye. So, by people who don't know Naval Gupta from the deep, or they don't know Naval Gupta's journey. So, how would you define it? And you can introduce yourself to in deep, to the community, and how you started and where you are right now. What it took to be from where you were to where you are right now. It'll be great if you can introduce yourself. Yeah, sure. So basically, like, I am an engineer by profession. I did my engineering in like electronics, which I know nothing of. And in 2014, basically, like when placement started, in like 2013 only, like I was like doing internship in like one company, Wipro, and at that time I knew कि like corporate तो नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है. तो 2014 में मैं मतलब like I was like doing freelancing somewhat college में ही, ठीक है, कुछ कुछ करते हैं. I started as a web developer. I didn't know about like marketing and anything. I started as a web developer, then I like slowly transitioned into marketing because like some of my clients required SEO and other things. उस time SEO बहुत होता था, ads वगैरह नहीं चलता था ये 2013-14 में. So then I like transitioned into like SEO and everything. But starting में I was only focused on basically website development and all, like 200, 300, 400, $500 की websites बना रहे थे. वो भी like I was like getting some basically clients through like referrals and anything by word of mouth. कुछ ऐसा process नहीं था. Then I was introduced to Smart Passive Income by Pat Flynn blog था. एंड देन नीश परस्यूट्स. तो मेरे को फिर हो गया वो ड्रीम दिख गया कि पैसिव इनकम कमाएंगे, 5-10 हज़ार डॉलर कमाएंगे और फिर भाई मजे करेंगे. ठीक है, 2 साल बहुत करा बैंकॉक है, उसमें. थाईलैंड बैंकॉक जाएंगे. जाएंगे, हाँ, डैनियल वासर के साथ बैठेंगे उसके मास्टरमाइंड में हम. तो फिर 2 साल करा, मतलब काफी ब्लॉग्स बनाए, कुछ चले भी कुछ नहीं चले, बट ऑन एंड ऑफ था, वो स्टेडी इनकम नहीं थी. अब 2 साल हो गए, 2016 हो गया. कुछ मतलब कुछ था नहीं ढंग से, मतलब $500 हो जाते थे, कभी $700 हो जाते थे. Then I finally decided कि भाई अब तो कुछ करना है. So then I went to Upwork. I knew about Upwork when I like started, but then I like took it very very seriously. I studied all the freelancers who were like doing freelancing very very well, and then like I basically modeled them what they were doing. I modeled their profile. I studied their niche, what niche they are in, what niche were profitable. At that time when I started, I analyzed like SEO is अब वो पुराना हो चुका है, SEO में कोई फायदा नहीं है. $5-7 पर आवर या $3 पर आवर पे तो लोग काम कर रहे हैं, मेरे को वो काम करना ही नहीं था. Then I basically learned Facebook ads and all of those things, and then I jumped into Facebook ads. मैं Facebook ads चलाऊंगा for local businesses. तो वही ट्रेंड था, सब मार्केटर्स यही सिखाते हैं कि local businesses पे जाओ. तो मैंने सोचा चलो इसी पे जंप करते हैं. Then I got a gym client first, and then like slowly Upwork से ही मेरे को मिलने लगे. And then एक पॉइंट आया कि Upwork पे in 2017-2018 75% of my clients were lost, but I was making like very very good money. मतलब 3-4 हज़ार $5,000 तक भी जाता था एक महीना only through Upwork. ठीक है, बट एकदम से लाइक आई लॉस्ट 75% ऑफ द क्लाइंट्स. फिर वही हालत हो गई कि भाई $500-700.
तो मेरे को लगा ये तो फिर एक ही प्लेटफॉर्म पे आई एम लाइक डिपेंडेंट ओनली दैट. देन आई like learned new strategies. I learned cold emailing, I learned LinkedIn, and then I transitioned from a freelancer to business owner. And basically, at that point of time, I read one book, Rich Dad Poor Dad, by Mm-hmm. Robert Kiyosaki. So then I analyzed, okay, उसमें चार quadrants होते हैं ना, that I am self-employed. I have to like transition to business owner to basically make a great impact on my life and like if I have to basically run a business. Then I like transition to agency model. I learned some things. I basically set up that system, which is like working right now as of now. मतलब 2-3 साल से वही चल रहा है, कुछ change करा ही नहीं मैंने. All the most 95% of the clients are totally organic. I do not like even take referrals. मैं referrals का बोलता भी नहीं, और मुझे सब खुद ही आते हैं. I rarely ask for referrals also. So this is like where I'm at, from like from a BTech graduate, then to a freelancer, then lost it all, and then like basically to generate my own clients through my system, which I learned from other people. मतलब खुद का कुछ invent नहीं करता. I follow Russell's policy, like Anthony Robbins policy. कि जो कर रहे हैं ना, तो उनका बस मॉडल कर लो. कुछ अपना इन्वेंट करने में टाइम लग जाएगा. No, absolutely, that's true. I agree to that as well. Because a lot of today templates are available, for you to just Yeah. become inspired, take an inspiration and then model it for Mhm. yourself. Correct. Yeah, yeah, Awesome. Amazing. So, we talk a lot about, there's a wave of freelancing which has, emerged. If you see, it has become a boon soon the pandemic hit, because then there was the, Mhm. क्या कहते हैं, the online penetration of a lot of businesses increased as well. So, what do you Mhm. think is the current scenario of freelancing, where it is going right now, and what does it take to become a truly true freelancer and create a blue ocean of yourself? Because a lot of freelancers, they don't just get into the industry because they think they already a lot of people. What Mhm. should I do? I mean, what would I do if by even entering into it? So what do you Mhm. think, if a freelancer has to make its way to the top or become part of the Yes. cream like you are, so what does it take actually to be there? So actually, like the first thing first, you have to have a skill. Without skill, you can Mm, like jump into like freelancing. So the first thing you have to understand is like learn some skill and learn that particular skill which is in demand. मतलब वही फिर SEO वगैरह mm, करने बैठ जाएगा. SEO is still in demand, but SEO का like change हो गया है. Like if you follow some people, like they will tell you what exactly like SEO is all about. और basically मतलब जो in demand चीजें हैं, marketing especially, for example, like funnels are very much in demand, paid ads are very much in demand, and after the Facebook like recent update, so people are switching to different advertising platforms. So if you can like learn YouTube ads, so that they are very much in demand. If you are a good YouTube advertiser, you can start, but you have to learn some skill. You have to build a portfolio. Portfolio in the mm, sense like when I started out, like because like I had done some work in like 2 years affiliate and everything, so I had some little bit portfolio. But people who are in college, they have to like either do some good internships, build some portfolio by working for themselves. If they are working in a job that is pretty good, you can like showcase that portfolio as well. And then like if you are very new, I always recommend start with freelancing portals such as like Freelancer, Upwork, mm, etc. The point is because in freelancing, you don't have to like do only work. You have to manage clients, you have to talk with clients, you know how to also like say do sales and everything. So by like working on Upwork, you will get to know all these things. तो थोड़ा सा तुम्हें पता चल जाएगा कि क्लाइंट से कैसे बात करते हैं. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डू ऑल द थिंग्स वेरी वेल, इफ यू डू नॉट कम्युनिकेट, स्टिल यू विल लूज द क्लाइंट. ठीक है. एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि स्पेशली मार्केटिंग में पता है लोग क्या बोलते हैं. लोग बोलते हैं कि इफ यू कैन मेक मनी फॉर द क्लाइंट, ही विल बी विद यू फॉर एवर. नहीं होता ऐसा. 6 महीने बाद तो चला ही जाएगा चाहे तुम उसको कितना पैसा कमा के निकलो, बिकॉज ही विल लाइक ऑलवेज बी लुकिंग फॉर सम बेटर थिंग. ठीक है. मतलब हमने मतलब हम उनको 5x 4x ROI भी देते हैं, वो एक साल बाद भी चले जाते हैं. पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस. So that you have to also understand while like working when you're starting new. And once you have some experience, then you move to other platforms. You can like learn, you can do paid advertising for yourself to get clients, because by then you will have some structures कि हाँ मतलब मैं ये काम करता हूँ और मैं ये मेरे ये deliverables है, एंड आई कैन गेट दी. मतलब तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी. जब कोई स्टार्ट करता है तो उन्हें क्लैरिटी नहीं होती कि मैं करूँ क्या.
मतलब तो अपवर्क वगैरह पे करके ना तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन सी सर्विस इन डिमांड है, क्लाइंट कैसे बात करते हैं, तो उनको चाहिए क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो देन यू कैन ट्रांजिशन टू बेसिकली लाइक ऑल दीज प्लेटफॉर्म. सीधा ही लिंक्डइन पे जंप करोगे या कोल्ड ईमेल पे काम नहीं कर रखा होगा ना, तो फिर क्लाइंट मिल जाएंगे, फिर वही है कि स्ट्रगल ही करते रह जाओगे. True, true. And I think a lot of people say about client acquisition, but very, very few people talk about client retention. Yeah. You just keep adding people, keep adding people, keep adding people, and then it becomes, like a mental pressure on you to deliver, Mental. and then you Mm, fail, and then you use them, mm, and you even lose the ones you are already delivering. yeah, it happened. It happened with me. The way like that is where like our team comes into play. And the best thing is like you have to basically select few skills, or like you have to productize your service in a better way, if we can speak. For example, we provide only like one service to like one particular vertical. ठीक है, हम ये नहीं करते, हम एसईओ भी दे रहे हैं, हमें फेसबुक एड्स भी दे रहे हैं, हम गूगल एड्स भी दे रहे हैं, हम ये भी दे रहे हैं, नहीं. हम सिर्फ ये फनल बनाते हैं हमारा, हम ट्रैफिक भी सिर्फ फेसबुक एड्स के थ्रू लेके आते हैं, ठीक है, हमारा ईमेल ऑटोमेशन भी थ्रू ये एक्टिव कैंपेन चलता है, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है. हम फनल्स भी लीड बेस्ड या क्लिक फनल्स के थ्रू बनाते हैं. फनल्स के भी हमारे पास टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स इन द सेंस दैट दैट इज लाइक मतलब कि ये पेज ऐसे बनेगा, ये कॉपी भी ऐसे लिखेगी, लिखी जाएगी, और ये काम भी ये करेगा, ये काम भी ये करेगा. सो दैट लाइक वंस अ क्लाइंट कम्स इन, I give him a checklist कि ये सारी डिटेल्स मेरे को प्रोवाइड कर दो. जैसे ही वो देता है, I like assign it to a particular like team member कि ये काम करके दो, and in within a week or maximum like 10 days we are ready with setup and we just go live. तो एक महीने में उसका पूरा पता भी चल जाता है. So that is how, if you want to transition from a freelancer to agency, that would work. But ये कैसे आएगा, ये बस काम करके आएगा. Like because I worked extensively on Upwork, that is why I know कि मतलब ये ऐसे ही चलेगा. क्योंकि अगर कोई कि मैं एसईओ वगैरह कर रहा हूँ या मतलब मैं मल्टीपल सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मल्टीपल में कोई मेरे पास फ्रेमवर्क्स नहीं होगा, मैं मैक्सिमम 6 या 7 क्लाइंट ले सकूंगा. फिर अगर मेरे को और ज्यादा लेने, तो मेरे को एम्प्लॉय ज्यादा हायर करने पड़ेंगे. देन योर प्रॉफिट मार्जिन्स विल डिक्रीज इन एवरीथिंग. If you want to increase your profit margins, you have to productize your services. You have to basically have SOPs of everything, and then you will also be an expert in your field. For example, my industry, like I am very very active on LinkedIn, so my industry looks me at as an expert in my particular vertical. ठीक है, वो Correct. सिद्धार्थ राजशेखर से कोर्स करेंगे, मैं बताता हूँ आपको, सिद्धार्थ राजशेखर से कोर्स करेंगे और आएंगे मेरे पास कि नवली फनल बना देना हमारा. ऐसे होता है. मेरे इंडियन क्लाइंट्स में 99% ना सिद्धार्थ राजशेखर के स्टूडेंट हैं. Insane, insane. So it's good. If Siddharth Rajsekar continues, it's good for you. हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि भाई बेच. ढंग से बेच. बोलो, yeah, even उसको बोल दो, I can do your ads for you. Don't worry. I'll put in more money. I'll get you मैं फ्री में more करूंगा, webinars. तुम क्लाइंट्स लेके आओ, क्योंकि वो कोचेस है, उनको ना वो नहीं करना आता, उनको बनाना नहीं आता. तो एक एक लाख वाला सिद्धार्थ का मैं बताता हूँ, सिद्धार्थ के एक एक लाख वाले वो प्लैटिनम पैकेज भी ले रखा है, तब भी बनवाने मेरे से आते हैं. Insane, bhai. I mean, yeah, I mean, that's what, see, whosoever is watching, this is what is called, being smart in, acquiring. How do you acquire people? There are multiple ways, how you can do all of this. So you have to be very, very smart when you're entering the industry. You have to have your eyes open, your ears open, your senses open. If you sense an opportunity somewhere, don't think that, a lot of people are, competing. You can also compete, try and be unique when you're approaching someone. So I mean, if you close the client, it means it was worth it to, enter. And as Navabai said, if you're having a team, prepare SOPs, which is very important. uh, because if you have SOPs, then your team is functioning without, even if you are out of the country, even if you're traveling, your team is taking care, of your business, of your clients, because you have lined up everything. And then you're just taking calls and closing deals. That's what, you have a team in the back end working. So crazy, amazing, bhai. And bhai, there's one more thing. Do you believe in proposals? A lot of people debate this in today's world. Should you send proposals? Should you just close them on the thing? Should you sign Yes. an agreement? Should do that? Yeah. Yeah, so what I do is like I have a process in which like
I close clients. So first is like I do a discovery call when I'm like someone comes to me. I have to basically, because I have a certain price range and I have a certain basically a client portfolio in which I check all the parameters to the client. I do not take clients who is very new into market. I always take clients who have done something because उनको थोड़ा पता होता है like how marketing works. It will take certain amount of time to get results and they should also spend some time. So they have that kind of mentality. जो नए आते हैं, I do not like take those people क्योंकि फिर वो मतलब खुद करके देखो एक बार थोड़ा पैसा बर्न करो then you come into me, नहीं तो सारा blame मेरे पे आ जाएगा. तो that मैं उससे मैं वो पंगे लेते ही नहीं. So that is why to basically filter out those people, I always like tell them to schedule a call with me, and then we will talk. I talk. I basically have a few questions which I ask them, and then I tell them, okay, I will prepare a strategy. I tell the strategy on the discovery call itself. But to make them more understandable, I also have a proposal in which I share all the things. It's a very brief proposal, like 6 या 7 स्लाइड्स मैक्सिमम. एंड देन आई टेल देम ओके, आज अगर मंडे को हमने बात करी तो देन वी विल लाइक सिट ऑन अ जूम कॉल ऑन वेडनेसडे. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द थिंग्स, our deliverables, because it is very important for me to exactly tell the client what are our deliverables. नहीं तो क्या होता है कि वो फेसबुक एड्स, हम ट्रैफिक के लिए फेसबुक एड्स यूज करते हैं, वो बोलेगा कि हमने ना ये वीडियो शूट करी है, इसके सब टाइटल डालो. नहीं हम वीडियो एडिटिंग नहीं करेंगे. ये मैं तभी बता देता हूँ प्रपोजल में. ठीक है, जो हमारे एग्जैक्ट डिलीवरेबल्स हैं, ताकि ना बाद में कुछ भी उसको मतलब एक फालतू की एक्सपेक्टेशन ना हो. ठीक है. सो दैट इज माय प्रपोजल. मैं पहले सेल्स वही है कि डिस्कवरी कॉल एंड देन आई शो हिम द प्रपोजल. Most of the times right now, initially like when I started with LinkedIn, this is was the process which I extensively follow. But क्या होता है कि some of the client which comes to me, or some of the prospect which come to me right now, they even tell me कि नवल मेरे को बस proposal भेज दो, we will sign up by Wednesday, हमको दूसरी कॉल में बैठने की जरूरत नहीं है. तो मतलब वो थोड़ा सा फिर गेम खेल लो, मतलब अगर तुम थोड़े से एक्सपर्ट हो गए, बिकॉज आई लाइक आई एम अथॉरिटी टू इट. ठीक है, तो तब मैं वो नहीं करता. बट हाँ, जनरली मैं ये अगर मैं कोल्ड ईमेलिंग कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, देन आई यूज दिस प्रोसेस. बट अगर लिंक्डइन से आ रहा है, कोई मेरे को जानता है, तो देन आई डू नॉट यूज दिस एज ऑफ. True. Because he's already aware that you are an expert. He's already seen your एक्सपर्ट. work, हाँ. so he doesn't need to, हाँ. validate ki, by multiple calls ki, is he the one should I work for? The trust हाँ. factor is already there. Nice. Amazing. I mean, तो so if anyone, yeah, correct. Go ahead. या सो उसमें वही है कि हाँ, इसमें मैं ये गेम भी नहीं खेलता. लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक आई बेसिकली लाइक इफ आई एम कोल्ड ईमेलिंग से थोड़ा सा लाइक अथॉरिटी में फर्क आता है. यू कैन लाइक पिच योरसेल्फ एज अ अथॉरिटी, यू कैन ओनली शेयर द केस स्टडीज. ठीक है, तो देन आई वंस आई शेयर द प्रपोजल, आई ओनली फॉलो like once or twice. मैं बार बार follow up नहीं करता because I have like a pipeline in which like lead comes in like every day. I have like 3 to say 4 sales call every day. So मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि क्लाइंट क्लोज हो या ना हो, ओनली बिकॉज आई एम इन abundance ऑफ लीड्स. सो बट हाँ, अगर abundance नहीं है लीड्स की, so then you have to like also follow. बट हाँ, आई बिलीव इन शेयरिंग प्रपोजल्स एज वेल टू बी क्लियर ऑन माई साइड कि ये मेरे स्कोप ऑफ वर्क यही है एग्जैक्टली. इससे ना मैं आगे, अगर आपको और करवाना है तो देन ऑब्वियसली यू हैव टू पे मोर. बट हाँ, दिस इज लाइक व्हाट एग्जैक्टली वी नीड. Correct. And a lot of people, they get into this and then they're not able to get out of the contract. Contract होता है, वो आ जाते हैं अंदर. Then client starts exposing them, they start misusing their. So correct. I mean, anyone who is new, please consider having an agreement, having something. For you can also create a service level agreement, SLAs, जहाँ पे you are also defining at what time you would work, when is your desk, support desk available as an agency. So then client cannot go beyond the borders and ask to even serve you on a Sunday. You can say, sir, you signed this agreement on this is date, and it was agreed that we won't work on Sundays. So please ask your question too on Monday. Simple. So that like इसमें मैं एक्चुअली वैसे मैं कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करता. व्हाट आई डू इज लाइक मैं उनको एक्चुअली जैसे प्रपोजल में बता देता हूँ कि वी विल हैव अ वीकली मीटिंग ऑन फ्राइडे और सैटरडे. तो उसी में कुछ रहता है. इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, लाइक मैं उनको ये भी बोल, मतलब आई हैव 2 phone numbers. One is for personal and one is for like professional. Professional पे I am not even on WhatsApp and anything.
तो मैं कॉल तो उठाता ही नहीं, तो देन आई टेल देम कि लाइक दीज आर माय वर्किंग आवर्स, सो मैं वर्किंग में थोड़ा सा लाइक आई डू नॉट लाइक यूज अ फोन एंड एवरीथिंग, तो यू ईमेल मी, मतलब उनको फिर समझ आ जाती है तो फोन करते ही नहीं है खुद। They know this is how it works, so you don't email. Nice. So this is the authority, that you need to have with your clients. Otherwise, they literally दे scream. विल अब्यूज, मतलब वो उनका है थोड़ा सा, मतलब ये पार्ट Correct. एंड पार्सल है बिजनेस का, तुम कुछ भी कर लो वो मानते ही नहीं है। तो आपको ना खुद से ही मतलब करना पड़ेगा कि मैं यूज ही नहीं करता, क्या कर लूंगा। Amazing. So this is Ahan by speaking, or sorry, typing. He always wanted to listen to Naval by. Okay. अरे अरे So Aman has asked a question. I mean, before we get into the deep questions of how to get clients using LinkedIn, and then other stuff which you're very very pro at. Aman, I think we can create some short questions. So this way, we can then have a little bit more time for those. So what do you think? What is our discovery closing percentage? well, it depends upon like what type of audience I have. For example, on LinkedIn, I have like a good percentage of close rate. For example, like 20-25, it can go up to 35. It also depends upon the pricing. मतलब मेरे पास both आते हैं Indian and like international clients. So on international, I charge like 1500 to like 5000 it goes for 1 month retainer. Okay, so it depends upon like where the client is at. If he is selling something online, then maybe like if for example I get 10 people who are like doing something online and they want to scale, so my closing percentage will go up to like 40-45% or even like. But when they are new, when they are starting out, okay, they are thinking I have like done this coaching and so on, but I do not know how to implement all of these things, then my closing percentage can come down to even like 10%. Okay, so it depends upon audience. Also, it depends upon how like I am to them. Like, मतलब मैं specialist हूँ. Like for example, on LinkedIn, I am authoritative to them. So that is why they are very very eager to work with me. मतलब अगर मैं बताता हूँ कोई competition है मेरा, they are charging for example 500, I'm charging 1500. Still they will go with me because I am authoritative. That is only about, for example, LinkedIn. But on cold emails, it is a standard of like 6 to 10%. मतलब अगर मैं 100 email भेजूंगा, so I have a goal. I have to like close like one or two out of those 100 people. ठीक है, Got जो it. भी मतलब मैं 100 ईमेल भेज रहा हूँ, ठीक है। कोल्ड ईमेल्स में बिकॉज आई एम नॉट एन अथॉरिटी, आई हैव टू बी वेरी वेरी रिगरस इन गेटिंग सेल्स. सो इट डिपेंड्स अपॉन चैनल, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस, व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस वी हैव. देयर आर लाइक वेरियस वेरिएबल्स, कोई इसका सेट परसेंटेज है ही नहीं, क्योंकि ये वो नहीं है ना, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे ना, वी आर लाइक selling a service, and there are like lot of parameters involved in this kind of thing. Exactly. Pretty pretty in-depth answered. I think Aman, hope you got your question answered. And again, thank you for asking. It's a great question, by the way. इसका बस You, सोल्यूशन यही you है, अपनी पाइपलाइन फुल रखो हमेशा लीड्स की, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। ये सब मैट्रिक छोड़ दो, मतलब तुम बस टारगेट रखो कि मेरे को 5 से 6 क्लाइंट चाहिए, ठीक है, और तुम बस ये टारगेट रखो कि मेरे को 4 सेल्स कॉल पे रोज बैठना है और कुछ नहीं करना मेरे को, ठीक है, pretty अपना nice. So क्लाइंट this is a आएंगे। good target. Correct, absolutely, absolutely. If you know your numbers, key, you should have an historic data. For example, if you're working since 1 year, ki how many emails you send and how much you close. So according to that, if you want to scale, you need to just increase the number. Sales again, you would agree it's a numbers game. The more नंबर्स you गेम है grow, पूरा। the more you close, the more money you make. Awesome. टोटली। Okay, so this is for when we talked about Siddharth Rajsekar. Okay, so. Nice. So Govardhan has a question. I believe inbound client acquisition is very important to charge more and retain clients more. What do you have to say about this? हाँ, like I always like believe in inbound. That is why I'm more focused on LinkedIn rather than like cold emails, because in inbound it becomes very very easy for me to close a client. या वो आता है, वो खुद ही बोलता है कि नमन मेरे को काम करना है आपके साथ, आप प्लीज टाइम निकालो, काम करना है मेरे को, ठीक है। मैं बोलता हूँ टाइम नहीं है मेरे पास, जाओ। एक हफ्ते बाद आ रहा। तो मैं मतलब inbound पे that is why I focus more on inbound. If you want to go like organic mediums, if you want to generate clients through organic medium, the best way is LinkedIn. Connect with people, post content, and then like message them. Okay, like if you do so and so service, I like provide so and so. If you do so and so business, I provide so and so service. But yeah, मतलब कंटेंट पोस्ट डेली आते रहेंगे क्लाइंट्स, ठीक है। बट
मैं बताता हूँ इसका, ये मेन चीज है आजकल, ये बहुत वो चल रहा है, चीज चलती है, पर्सनल ब्रांड बनाओ, पर्सनल ब्रांड। अरे तुम बिजनेस कर रहे हो यार, सेल्स लेके आओ यार, पर्सनल ब्रांड छोड़ो, तुम ये सब छोड़ो, ठीक है? तुम उन लोगों के साथ कनेक्ट करो विच आर लाइक वेरी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, ठीक है? लाइक्स कमेंट से ना पैसे नहीं आएंगे, ठीक है? तो तुम्हें सेल्स कॉल पे बैठना पड़ेगा, ठीक है? तुम छोड़ो ये 1 लाख फॉलोअर्स वाला गेम, छोड़ दो ये सब कि मेरे पोस्ट पे भाई 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, 10 लाख, वो सब बेकार है, बकवास। ठीक है, तुम बोलो, तुम कनेक्ट करो उन लोगों के साथ के जो एक्टिव है उस प्लेटफॉर्म में, ठीक है? कितने मतलब यार, हम्म, फॉर एग्जांपल कि मैं मेरी पोस्ट 1 लाख बंदे देख रहे हैं, उसमें से एक भी सेल्स कॉल मेरी नहीं शेड्यूल हुई, तो बेकार है ना काम करना, मैं क्या करूंगा उसको, बताओ? ठीक है, मेरे you पास put a टीम lot of है। effort. हाँ, मतलब मेरे पास टीम है, मेरे को अपना घर चला रहा है कैसे चलाऊंगा मैं? क्या बोलूँ बैंक को कि ये भाई 1 लाख व्यूज है मेरे पास इसको थोड़ा कन्वर्ट कर दो रुपीज में, नहीं करेंगे ना वो। So connect with only those people who are like active on LinkedIn, don't care about views and everything, just post content. Connect every day with people on LinkedIn, okay? And then slowly they will like start noticing you and they will start messaging you. And one thing ये मैं बताता हूँ कि if people who are doing good, like for example, my prospects are like who are doing like 10 lakhs rupee business, 10 lakh per month business or 20 lakh, they will never comment on your post. ठीक है, उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, उनकी लाइक लाइक भी नहीं करेंगे वो, दे विल नेवर लाइक, उनकी ईगो बड़ी होती है, Very दे विल nice, मैसेज, very nice. दे विल मैसेज यू कि नवल मैंने पोस्ट देखा था, हमको काम करते हैं साथ में, ठीक है? तो दैट इज है Wow. उसका छोड़िए। हाँ, एंड देन द सेकंड थिंग, इफ यू वांट टू गो ऑन फेसबुक, सो ग्रुप्स आर वेरी वेरी गुड, but you have to also understand, if you like go on others group and just post like content over there, they will ban you, ठीक है? if you इसका अगर अंडरस्टैंड करना है ना इसका मतलब लॉजिक, इसका लॉजिक ये है, एक बुक आती है पावर, पावर बुक पढ़ना, उसका ना फर्स्ट रूल ही यही है कि ना अगर तुम किसी को आउटशाइन कर दोगे ना, अपने मास्टर को भी इवन आउटशाइन कर दोगे ना, वो तुम्हें निकाल देगा कि जाओ किसी और से सीखो तो I तुम know, किसी के I know. ग्रुप में जाओगे और फिर वहां पे वैल्यू, उससे ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करोगे, ठीक है? वो तुम्हें बैन कर देगा, तो ये मत करना कभी, ठीक है? जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना वहां पे लोग, उनके ना आंसर्स करते रहना, ठीक है? और Correct. आंसर I करना, agree. उन हाँ, उनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना एंड देन लाइक हैव अ कन्वर्सेशन विद देम, ठीक है? थोड़ा सा लंबा गेम है, बट हाँ, इजीली क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलेंगे ऐसे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। Amazing. Amazing. So we have one of the highest viewerships we had in the live session till now, 32 viewers. ठीक है, so मजा आ रहा है सबको, अभी लगता है कोई टैग कर रहा है, ओ भाई आ जाओ अंदर, नवे भाई आए हुए हैं. आजा आजा, आज सब राज खोलते हैं कैसे चल। Amazing. तो भाई ये क्वेश्चन है, आई एम इन एसईओ सिंस 2017, सॉरी, आई वांट टू अडॉप्ट न्यू स्किल्स, शुड आई लर्न एफबी एड्स और गूगल एड्स? नहीं, आस्क योर क्लाइंट्स उनको क्या चाहिए, मैं नहीं बता सकता। लाइक इट आल्सो लाइक डिपेंड्स, फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक यू मस्ट नो लाइक सैम ओवेंस, यू मस्ट नो लाइक रसल ब्रंसन, यू मस्ट नो गैरी वेनरचक, ठीक है? अगर चलो उनके मास्टरमाइंड्स है, तुम उनके मास्टरमाइंड्स में बैठो, उनसे काम सीखो, अगर तुम उनको रेप्लिकेट करोगे ना, तुम्हारा बिजनेस चलेगा नहीं। द रीजन बीइंग, यू हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड डिफरेंट इंटरेस्ट एंड डिफरेंट पैशंस, ठीक है? आई डू पे फेसबुक पेड एडवर्टाइजिंग बिकॉज आई लाइक पेड एडवर्टाइजिंग, आई कैन गेट देम रिजल्ट्स फास्ट, ठीक है? सो दैट इज द मेजर थिंग आई डू, पेड एडवर्टाइजिंग, बट पीपल आर वेरी वेरी गुड इन SEO, ठीक है? इफ यू फॉलो लाइक इंडियन पीपल, सौरभ राणा, इफ यू फॉलो, ठीक है? इफ यू फॉलो लाइक सम अदर पीपल, दे आर वेरी वेरी गुड इन SEO, ठीक है? सो इट अरबाब भाई. डिपेंड्स अपॉन यू। अरबाब भाई इज वेरी वेरी गुड इन SEO, ठीक है? सो इफ यू आर लाइक दोज पीपल हु आर लाइक इंटरेस्ट इन SEO, देन गो विद SEO। लाइक अगर तुम बाहर के देखो, फॉलो डेरिल रसल, ही स्टिल डू SEO, मतलब वो 2010 या 2009 से SEO ही कर रहा है, वो कुछ और करता ही नहीं, ठीक है? सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू पे यू मनी, ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं होता है, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, आस्क क्लाइंट्स व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग एंड सी इफ यू कैन हेल्प देम विद दोज problems. And still, if you want to like transition to Facebook ads, then yeah, obviously learn those skills and understand which businesses needs like those kind of skills, and then approach them. बस और कुछ नहीं है इसमें। Amazing. This live to the moon. This is Sarang commenting. Okay. So mainly focus करे sales and closing पर. Yes, buddy. Sales is तो everything. बिजनेस Money is के everything.
यस, बिजनेस in में और business. चाहिए क्या? हाँ, It's बस यही numbers, it's चाहिए। money, man. नंबर्स, काम हो जाएगा, काम तो होता रहता है, काम के लिए दे आर लाइक एक्सपर्ट्स एवरीवेयर, यू लाइक हायर एक्सपर्ट्स, ठीक है। अगर इफ यू वांट टू लाइक बी अ बिजनेस ओनर, देन यू हैव टू फोकस ऑन सेल्स, और कुछ बाकी सारे वैनिटी मैट्रिक्स है। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि किसी को मतलब एजेंसी चलानी है ना, तो मतलब ये बस एक पार्टनर ढूंढ लो, अच्छा टेक्निकल पार्टनर जिसको काम आता हो, Hmm. ठीक है, और बाकी Hmm. तुम सेल्स पे फोकस करो, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छी मतलब दस True. हजार डॉलर तो तुम दो बंदे ही मिलके पहुंचा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो भाई साहब इतने को इंस्पिरेशन हो गया ना, पता चला कल कल वो आ गया, अरे भाई आपका मेहनत सेशन लगती है। क्या था, टाइगर क्लाइंट क्यों हो गया? मेहनत लगती है, ये नहीं, मैं उठता यार, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर मैं रात को यार मतलब सोता हूँ 10, 11, 12, 1 बजे तक, तो मेहनत लगती है वो तो इसमें, ये है कोई भाई, हवाबाजी नहीं हो रही कि बस वो तो है चल रहा है भाई। ये बोल के। नहीं नहीं, वी कैन सी कि इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। एजेंसी बिजनेस इज, इट्स लाइक बाल सफेद जल्दी हो पीपल जाएंगे, बिजनेस है, हो हाँ, जाएंगे। पीपल बिजनेस है। पीपल बिजनेस में लाइक यू विल हैव अ लॉट ऑफ हेडेक, मतलब ट्रू। हेडेक का तो तुम मतलब, ये तो जो लोग लाइक, हाँ मतलब हाई टिकट क्लाइंट्स अगर तुम लाओगे, दे विल कॉज अ लिटिल लेस हेडेक, बट हाँ हेडेक तो होगा ही होगा। सेल्स नहीं आ रही, क्या करोगे? मतलब तुमने यार उनसे $2,000 ले रखे हैं, तुम सोचो। तुमने उनसे 1.5 लाख ले रखे, सेल्स नहीं आ रही, क्या बोलो? सेल्स नहीं आ रही भाई साहब। उनके इन उनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, ठीक है। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में 80-20 रूल होता है, लाइक आउट ऑफ लाइक 100 प्रोडक्ट्स 80 विल फेल, 20 विल गो। अब 80 तक टेस्ट करने जाओगे, ठीक है, उनको इतना पैसा लगा लिया, बाकी 20 भी वर्क नहीं कर रहे, कुछ है मतलब तुम्हारी किस्मत ही नहीं चल रही, तुमने पैसे ले रखे, क्या करोगे बताओ? ये सारी ऑसम पीछे भाई। की चीजें हैं, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये वो नहीं है, मतलब आई नो। दूर से मार्केटर्स तो बोलते ही हैं कि क्लाइंट लाओ काम कर लो, बट पीछे की चीजें ना बहुत होती हैं। कोई नहीं बताएगा वो कोई नहीं बताएगा। क्योंकि मार्केटर्स का तो होता है ना, ड्रीम दिखाओ, तो हम ड्रीम ही दिखाते हैं। Met Naval during web fair. हाँ, This is बहुत Himanshu. पहले, बहुत पहले एक इवेंट करा था वेब फेयर, सो आई गेस देन ही मस्ट हैव मेट। नाइस टू मीट यू Correct. अगेन। So I think we would go for one question. Are you using sales script for code emailing? Of course. Yeah, like to send cold emailing, I use a certain framework, script नहीं, एक Hmm. framework ही होता है मेरा हर किसी का। को सेल्स कॉल पे बैठने के लिए आई यूज टू फॉलो सेल्स स्क्रिप्ट, बट यस, मतलब मेरी सेल्स कॉल अब इतनी हो जाती है कि इट इज लाइक इनबिल्ट, मतलब मेरे पास कोई भी कभी भी डिस्कवरी कॉल करवा दो तो मेरा ना मतलब दिमाग में एक स्क्रिप्ट चलती है, तो फिर वो अपने आप ही। बट हाँ, इनिशियली लाइक आई यूज टू फॉलो अ सेल्स स्क्रिप्ट, एंड देन बेसिकली व्हेन आई लाइक टॉक विद अ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स, देन आई केम टू नो कि अच्छा ये बोलना है, ऐसे बोलना है, तो क्लाइंट कन्वर्ट हो जाएंगे या क्लाइंट मानेंगे, ठीक है। तो Hmm. वो फिर वो बात कर करके पता चलता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है वैसे कुछ भी, एक्चुअली वो सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, यू कैन फॉलो फ्रेमवर्क, बट देयर इज नो टेम्पलेट, देयर इज नो स्क्रिप्ट व्हिच कैन गेट योर सेल्स। Got it. पीपल बिजनेस है, बात नहीं करोगे तो नहीं आएंगे sales। नहीं, बात pretty much agree there, man. I mean, I hope a lot of people should understand ki it's you have to learn sales, you have to learn how to communicate, you have to understand human psyche. सही। So there are a lot of factors involved before you even take your first client. People take it for granted. I don't know how. Anyways, that was a great tip. So hope you got your answer. Damn, questions तो भरे जा रहे हैं भाई। चलो इनको एक एक हाँ, करके तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा। Okay. How should we start conversation on LinkedIn? Uh, like initially, what I do when I start, when what I did when I started on LinkedIn, like um, I understood my audience कि उनको चाहिए क्या, ठीक है। तो Hmm. उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि कस्टमर अवतार वगैरह तो छोड़ो तुम, जो कोर्स बेच रहा है ना उस इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल मैं कोचेस कंसल्टेंट को बेचता हूँ, मैं सिद्धार्थ राजशेखर का वेबिनार देखूंगा जाके, वो क्या बोल रहा है, ठीक है। वो कौन सा पेन पॉइंट बता रहा है, उसको बिक रहा है, वो बता रहा है, तो मैं सीख लेता हूँ उससे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जाऊंगा फिर अपने प्रोस्पेक्ट के पास, आई नेवर लाइक सेल देम इन द फर्स्ट हैंड, आई टेल हिम अ जेन्युइन रीजन व्हाई आई वांट टू कनेक्ट विद देम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर Karan, you are my target audience. Hi Karan, I saw your LinkedIn, I saw your this post. If I can make it more customizable, then it would be much likely for you to accept my request.
Then I say, hi Karan, I saw your post this on LinkedIn. It was a great so and so. I would like to connect with you. Okay, then like you accept my connection request, and there are like 90% chances that you will also reply because I complimented you. Okay, Hmm. तो conversation start करने का. If you do not reply, what I do is after like 2 or 3 days, I follow up with you. Like you are after analyzing your website and everything. Okay, you are doing webinars and everything. What is your like conversion issue? Are you happy with it? तो वहाँ पे उसका दुख निकल के आएगा कि अरे मतलब ब्रेक इवन हो रहा है तो और दुख बताएगा अपना वहाँ पे तो उसका वही प्रॉब्लम सॉल्व करो और फिर कर लो बट हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑटोमेट करना छोड़ दो ये ऑटोमेट वगैरह ये True. सब इसको Yeah. छोड़ो ये सब Hmm. तब करना जब तुम्हारे प्रोसेस हो जाएंगे अभी बस बात करो लोगों से एक कन्वर्सेशंस करो लोगों से ठीक है कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारे बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है लिंक्डइन पे फेसबुक पे ऐसे ही कन्वर्सेशंस करो उनके पेन पॉइंट ढूंढो उनको भी अच्छा Very लगेगा true. यू आर लाइक टेकिंग पेन यू आर लाइक टेकिंग यू आर डूइंग सम एफर्ट्स in to improve their business and that's how you get like at least like 5-10 clients in a month or so using this and then you automate the process. Amazing. Okay. So, hope you got your question answered. This was one of the best tips. Don't automate. Even LinkedIn, catches you. Right now हाँ अब they're तो on कैच कर fire लिया when it comes. They're on हाँ हाँ fire when अब it तो comes कैच to कर banning your accounts. It's just like Facebook ad लिया accounts. They're banning you, even if they हम्म, catch a little bit. What you're doing. So don't do that. हम्म, Do some hard work if you want to. Really talk to people, convert हम्म। them. Put some work, man. I mean, sit on हाँ Sunday. कर go. I mean, अच्छा इतना भी लाइक tough नहीं है. टेक 2 or 3 hours in a day उससे ज्यादा तो नहीं लगता टेक टू और Hmm. थ्री आवर्स Very true. Very true. So, okay. Hi, Naval. This is from Sachin, actually. How do you handle projects when you don't have bandwidth? Do you pass it or outsource? So, Nice question. like I have a team. I do not like outsource. I outsource only to like graphic designers. I have like some freelancers. So that is Hmm. the only part that I outsource. Otherwise, I have a team to like do all the works. I do not take more than like 12-15 clients in a month. Hmm. So apart from that, मतलब थोड़ा सा like I also like focus on my personal life and all of these things. So otherwise, if I have to like take more than those clients, I would prefer to hire because I have a niche like marketing agency in which we like serve a particular industry. So that is why I hire and I train people on those particular skill sets and then I like give them the work. So that is why I do not prefer. But yes, I'm टेस्टिंग इट आउट एक बार टेस्ट करके पता भी चलेगा लाइक आई हैव नेवर डन दिस बिफोर बट हाँ आउटसोर्स में सिर्फ Hmm. ग्राफिक या वो वाले काम ही करता हूँ और कुछ नहीं आई हैव अ टीम इन प्लेस Amazing. So yeah, having a team always works if you have to run a business. If you don't want to be self-employed, remain self-employed. So have a team, because again you have to be free. Otherwise, you are just an employee in your own business. एम्प्लॉय हाँ वो सेल्फ So एम्प्लॉयड वाली बात हो जाएगी कि क्लाइंट आ रहे हैं काम कर रहे हो फिर क्लाइंट चला गया फिर दोबारा क्लाइंट ढूंढ रहे हैं फिर दोबारा काम कर रहे हैं वो हैमस्टर व्हील में फंस जाओगे भागते correct, रहोगे सर्कल में absolutely, absolutely. हम्म। Okay, what software you're using for cold emailing, and how do you warm up your email? So I use Lemlist. So Lemlist have a feature in which like it automatically warms up your email. But if you're using Mailcheck and everything, what you can do to warm up is like have subscribe to Neil Patel's blog, Quick Sprout from its city, BuzzFeed, emails on it, and then like reply to like tell 10 or 5 of your friends to email you, and then basically like reply back to those and everything. So do that if you can. The swarm up and Correct. make sure you do not like send more than like 10 emails a day if your account is very very new. Hmm. If does this email ही Hmm. भेजो and then like slowly increase next week 20, next week 30, and then slowly scale to 100. Otherwise ban हो जाएगा जी जी. True. Though I think जो spam filters have the ISPs, they would, हाँ बहुत ESP, strict. sorry, they would catch अब you, तो काम and then they would हाँ correct. हाँ, अब तो थोड़ा काम भी ज्यादा So रेडी हुआ है तो like set up DKIM SPF लेमलिस का ब्लॉग पढ़ लो सबसे मजा आ गया स्टार्टिंग बस के लिए what a fine blog they have. I mean, it just explains everything very much clearly. So I would just, वेरी list out a resource in the banner section. Just one second.
Okay, so you can go and go to this URL and basically read everything you need about need to know about code emailing. I mean, of course, the general stuff, and then they also teach you advanced tactics. But you can find those things. They also have a YouTube channel, so go to lemgis.com and do make sure you also follow their. You just sign up for the email list, and you would get stuff. So now bhai आपकी LinkedIn, they can anyone can connect with your LinkedIn, right? They can just shoot your message, हाँ. and then ठीक है, I'll just write. So okay, just give me 2 minutes. Okay, we'll move on to the next questions in the meantime. Amazing. How would you track all your works and share the status with your teammates? So tracking works like if I am audible, no? Yeah, yeah, you're audible. I'm audible. So to track work, like I use Trello. Whenever client sign-ups, I use Trello to basically make a board. कि क्या उसमें लगेगा, what are the things that we need to set up and all of those things. I assign people over there, and उसमें पूरा मतलब date पे mark होता है that you have to like finish so and so at this date. For personal communication, for internal team communication, we use Slack. We are like testing various other software, but the Slack भी work करता है. And for my personal to basically like put out content and everything, what I do is I like write content on Sundays and schedule on Monday using Publer. I write written videos वगैरह, इतना टाइम नहीं होता एक्चुअली मेरे पास वीडियोस वगैरह करने का, तो इससे I write like written content and like post or using like schedule using Publer. That is what I do. Power is 180, which I refunded. अरे उसका मिस कर दिया एलटीडी. अच्छा क्यों, मेरे को दे देते यार. उस वक्त भाई आई मीन मैं कोई यूज केस नहीं था क्योंकि आई डिडंट हैव एनी आई मीन आई यूज्ड टू पोस्ट वेरी यस दैट टाइम सो पबगर आई मीन इट वाज एन इंपल्स परचेज सो मैं थॉट कि गया अंदर तो मैंने कहा यार ये तो ठीक है बट इसका भी काम नहीं है क्या करूं तो यार उस वक्त नहीं सोचा कि रिफंड तो इजी है वहाँ पे रिफंड मांगे तो रिफंड मांगे तो अब स्टिल आई मीन आई कैन गेट इट फ्रॉम डिफरेंट ब्लैक मार्केट में जाके आई कैन टेक इट बट आई डोंट सी इट एज अ यूज केस. $250 का बेच रहे हैं लोग अभी उस करेक्ट सो काम का ही नहीं है ना मिस कर दिया. काम का ही नहीं है अभी अब वैसे ही सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहता ही नहीं है ग्रुप में डायरेक्ट आके यू कैन पोस्ट यू आई डोंट डू इंस्टाग्राम आई डोंट डू लिंक्डइन पे भी नहीं जाता मैं आजकल सो नव तुम्हारी प्रोडक्टिविटी का राज क्या है ये क्वेश्चन आया भाई. ये गीत का क्वेश्चन है. अरे बताओ राज बताओ. अरे भाई बस यार स्केड्यूल है यार. लाइक आई फॉलो स्केड्यूल. लाइक सुबह ये काम करना, दोपहर पे या रात पे, तो बस यही है प्रोडक्टिविटी का राज, कुछ नहीं. फोन साइड में रख देता हूँ और बस काम काम पे बस. फोन के साथ काम नहीं होता बिकॉज लाइक आई लाइक टू प्ले गेम्स. मतलब अगर फोन में नोटिफिकेशन आ गई ना कि ये गेम खेल रहा है तो काम वाम छोड़ो और लग जाओ गेम खेलते. ऐसे टेबल पे वो कर दो बस. टेबल पे पैर चढ़ा के और ऐसे बैठ जाओ. सही है भाई. सो हाँ सही है. अरे पबजी तो इतना खेलता था ना मैं, उसके इससे बहुत सफर हुआ है. okay, so Diptesh is asking some inbound marketing tactics. Can you be more specific? I think inbound marketing बहुत होती है. Go organic. हाँ, inbound marketing organic, like there are like two channels, organic and paid. Organic use LinkedIn and your Facebook, and if you want to like go with paid, then use like Google Ads. That works well. Best थोड़ी सी कॉस्ट पर like ली होगी. फेसबुक एड्स यूज करना जब काम करना आता हो, मतलब फेसबुक एड्स इज लाइक अ शॉपिंग मॉल. मतलब लोग वहाँ जा रहे हैं और देख रहे हैं कि अच्छा ऑफर कहाँ है अच्छा ऑफर, वहाँ चले जाएंगे, तो जब बात करेंगे ऑफर और प्राइस अच्छा लगेगा तो तुम्हारी सर्विस लेंगे. तो फेसबुक एड तभी यूज करना है लाइक वेरी वेरी कॉन्फिडेंट और तुम्हारे पास थोड़ा पेशेंस हो. अदरवाइज लाइक यूज गूगल एड्स एंड एवरीथिंग. बस इनबाउंड के लिए यूज लाइक लिंक्डइन इज बेस्ट. लिंक्डइन एंड Facebook groups, and cold email will also work if you know like your audience pretty well, and if you are
फॉलो इफ यू कैन फॉलो सम स्क्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग, अदरवाइज मतलब मेरे पास तो रिप्लाई आते हैं, लाइक कोल्ड ईमेल्स आती हैं कि वी प्रोवाइड सो एंड सो सर्विसेज, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे ईमेल भेजोगे ना, जीरो रिप्लाई आएंगे, जीरो। ठीक है। Dear, dear, तो एलेक्स dear वर्मन sir. का चैनल फॉलो कर लो। डियर Yeah, सर, डियर he's an सर, OG. सीसी में इतने सारे सर होते हैं। हाँ, तो Alice एलेक्स Berman वर्मन का फॉलो is कर लो यूट्यूब amazing. पे। और फिर अगर तुम्हारा True. मतलब कुछ रिजल्ट ले आओ कुछ, एंड देन लाइक फॉलो अ मेंटर, मतलब बाय सम कोर्सेज एंड एवरीथिंग। एक मुझे ये भी नहीं कि 10 Mm-hmm. कोर्स खरीद ली, ये एक का कोर्स खरीदना, इम्प्लीमेंट करना आराम से। Correct, correct. Okay. So Sahil has a question. What is the best source on Google to earn practical email marketing? नो आइडिया, मतलब I think he's talking about you're talking about cold email or talking आज about the email marketing. If you can let me know in the comments. Okay. Okay. So let's see next question. बहुत सारे हैं. Okay. How to start a freelance consulting service? Can you share what is needed for consultations? I think consulting is different from freelancing, right? Or is it same? Consulting. यार ये तो बहुत वेग क्वेश्चन हो गया, मतलब क्वेश्चन पूछना भी वैसे एक आर्ट है, Hmm. इफ यू कैन लाइक मतलब थोड़ा ढंग से क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर भी अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पूछना। अब ये तो वही बात Okay. होगी कि मतलब आईएएस बनने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। अब वो बोल Hmm. देंगे भाई हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, फिर मेंस दो, फिर प्री दो, फिर मेंस दो, वगैरह वगैरह। ठीक है, फ्रीलांस कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए मैं तुम्हें बस यही बता सकता हूँ कि फाइनलाइज योर नीश, check out like what others are doing, and like what is the Hmm. profitable business, high ticket sell कर सकते हैं, never sell to people who do not have money, ये basic rule है। ठीक है, अगर तुम वो भी Hmm. देखोगे, वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट भी देखोगे, सबसे पहले वो वही सिखाते हैं कि वी सेल टू ओनली वेल्दीएस्ट ऑफ अमेरिकन। ठीक है, तो आप वेल्दी पीपल के पास जाओ जिनके पास पैसा है, नहीं तो ना Hmm. कॉल्स पे चिक चिक होती रहेगी। ठीक है, फाइनलाइज द नीच, फाइनलाइज हुआ लाइक अर्निंग सम गुड मनी, एंड देन लाइक आइदर लाइक जो भी तुम्हारी कंसल्टेशन है उसका एक ऑफर बना लेना, क्योंकि वो तुमसे कॉल पे पूछेंगे कि कंसल्टेशन पे देते क्या हो, और वहाँ पे ऐसे हुआ ना तो नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। यू हैव टू स्ट्रक्चराइज योर कंसल्टेशन कॉल्स इवन, लाइक कि मैं क्या ऑफर करता हूँ, एंड देन बेसिकली लाइक देन इट इज अ गेम ऑफ लाइक हाउ मेनी लाइक consultation, like sales call you are in, and like how many people are close. So niche, select people, and then like create your offer. Amazing. Amazing. I think that's pretty much summed up. If you just if you have to go in depth, of course, there are ton of steps in each of the things. How to find a niche, how to approach someone. Mm. So next time when you're asking a question, be specific in one section so you can get a specific answer to that section. Otherwise, this becomes a very vague answer. You just have to then again go back to Google and find what goes inside finding a niche. So Mm. otherwise, again your research time increases. So this is one of Mm. the art. Again, yeah, you're right. Asking question is an art. Anyways, so there's an interesting question by Mhm. Upwork पर bidders का क्या सीन है? Hiring someone to bid for me. मतलब like you can do, but again if you do not know how to build तो उनको क्या सिखाओगे? ठीक है, so like if you can learn like how to build, तो like it would be great, otherwise जिसको ये काम आता है ना, first thing जिसको बिड करना आता है, प्रोजेक्ट लेना आता है, he will never work for you। सीधी सी बात है, उसको पैसा कमाना आता है, जिसको पैसा कमाना आता है वो क्यों किसी के लिए काम करेगा? लॉजिकली थिंक अबाउट इट, एंड देन लाइक इफ यू वांट टू लाइक सीरियसली बेसिकली गेट सम प्रोजेक्ट्स, देन लर्न। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, भाग भाग नहीं सकते इस चीज से। Pretty much. मतलब अरे यार प्रोजेक्ट ढूंढने इसमें ना मेरा थोड़ा सा ना रैंटिंग स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली, है ना। मतलब प्रोजेक्ट ढूंढने हैं, प्रपोजल भेजने हैं, आधे घंटे का काम है, उसमें भी हायर करना है किसी को। जो अरे मतलब ओके. जो 6 घंटे का काम है, जो जो काम करना है वो उसके लिए हायर कर लो, थोड़ा लाइफ इजी बनाओ अपनी। Amazing. Okay.
So we have two questions. Quick, just answer we can give quick, which is how to find your niche. I think there's a question from Himanshu. I think, yep, and how you manage your taxes. So how do you find your niche? So that is again what I will say is like follow what are your interest. You have various skill set, write down in a piece of paper कि मेरे को ये आता है, and then circle out which are the best skills or which are the skills that you would love to do. मतलब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन का आंसर कर दो कि अगर मेरे को इसका पैसा ना मिले तो भी मैं ये काम करते रहूंगा. ठीक है, अगर ये तुम्हारी कोई स्किल सेट होगी ना जो तुम्हें कोई पैसा भी नहीं देगा तो भी तुम काम करते रहोगे, देन दैट इज लाइक योर स्किल सेट विच यू हैव टू चूज. ठीक है, देन नीश, देन यू हैव टू सेलेक्ट इंडस्ट्री ऑल्सो. ठीक है, कि ये स्किल किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लगेगी, एंड देन फाइंड आउट पीपल. अगेन पीपल फाइंड आउट, ढूंढने का वही तरीका होगा, check people who have money to pay for your services. So choose your skill set and then choose your industry maybe which have money, and then like shortlist all the people who have money and approach them. Pretty simple, you know. Work where your heart, guys. Work where you know you can provide results. You're confident. So yeah, then you would scale faster. Okay. So next question is how you manage taxes. Yours is a private limited, right? Company. Taxes, like if you're a freelance, Hmm. I think there's a connection error, so we would wait no, for. I have sole proprietorship. अच्छा भाई, I think there's a connection gag हो रहा है. So Am I audible? now it's fine. Now it's fine. Now it's fine. So taxes के लिए like I have a sole proprietorship. If you are a freelancer, then I would definitely suggest if you like earn more than like 5 lakhs ना, sole proprietorship register कर लो. ठीक है, because 20 if you're like earning 20 lakhs or something, if you are a company then you don't have to like pay taxes. ठीक है, अदरवाइज तुम फिर वो स्लैब गेम स्टार्ट हो जाएगा एंड देन यू हैव टू पे टैक्सेस. सो इफ यू आर अ फ्रीलांसर, इफ यू आर अर्निंग मोर देन लाइक 3.5 lakhs or 5 lakhs, make a sole proprietorship, and then you don't have to like pay taxes. And then obviously if you are a sole proprietorship, then if you are charging Indian clients, then you obviously have to pay GST if you are charging clients. If your profit is more than like 24 lakhs, I don't know like much about it, then you have to pay taxes. If it is below than that, then you don't have to like pay taxes. So best answer सी ये देगा वैसे इसका, but this is what I am. ठीक है, amazing. Okay. I hope we didn't. Okay, we have a question from Sarang. One second. Okay, there's one more question. I think that's just general. One second. I just. एक second. Let me just. हाँ, yeah. So this is for Sarang wrote. What strategy do you use for cold emailing? Cold emailing, I basically first thing is I filter out like prospects who are my exact target audience. So मतलब मैं एक मेरा जो customer है उसको मैं research करके I filter out those people, and then uh, on a script what I follow is for example if I am mailing Karan, then what I will do is, hi Karan, I found you through so and love what you are doing at so and so, or basically a compliment. First line is compliment, and then I will introduce myself. My name is Noel, I do so and so, I help, मतलब जो भी मेरा मतलब काम है वो मैं बताता हूँ in a brief 2 or 3 lines. And then I share some case study in the sense recently I have had मतलब वो document नहीं attach करना सबसे पहले बात, कोई भी document case study मतलब 1-2 लाइन लिखनी है. Recently I have helped so and so people increasing their revenue by so and so, and then a call to action, would you like my help? If you want to, I can like send some like time, or like I do not like even share a calendar link or so. I always say at the end, okay, if you want my help, I can share some time slots available. That's it. So all in all, brief, filter out your prospect, customize first lines according to them, compliment them, and then tell them about yourself and have a call to action. Best place, YouTube पे सर्च कर लेना एलेक्स वर्मन कोल्ड ईमेल स्क्रिप्ट, यही एग्जैक्ट बताएगा. मैं वही फॉलो करता हूँ, मैं कुछ फॉलो नहीं करता मैं. हाँ भाई, वो जब वो बाद में बात करते हैं DM में, कोई दिक्कत नहीं है.
I don't know. Uh, okay, so I think we have covered most of the questions. Yes. There's one thing, which a lot of people, अगर new है, moderate है, intermediate है, they still don't know कि when they should fire a client. So they hire a client, they work, they don't ask questions. कहीं ना तो कोई agreement होता है, कुछ होता है, and then they don't know when to fire a client. They feel hesitated, कि यार इसको कैसे मना करूँ, ये तो पैसे दे रहा है मुझे, ये तो यार इसकी वजह से अच्छा बिजनेस आ रहा है, लेकिन मेरे को ये इसने, अकॉर्डिंग टू हिम, I mean, you are his employee and he's your boss. So they are only tied to the relationship because they're giving them good money or fine money. So what do you think a freelancer should do in this situation? Because a lot of people, they ask this question. My client is an bad, is a jackass, and he's doing this, he's doing this. Even Quora पे आप जाके देखो, Quora पे भी ये question देंगे आपको. So what do you think is the right answer? When should someone fire a client? इसका अगर वैसे रीजन रीजन पता है क्यों ये क्लाइंट के साथ काम करते हैं, लाइक यू आर मिजरेबल एंड स्टिल यू आर लाइक वर्किंग विद दैट क्लाइंट, द रीजन इज यू डू नॉट हैव अ पाइपलाइन फुल ऑफ लीड्स. दिस इज द ओनली रीजन. अगर वो सॉर्ट आउट हो गया तो उसको भगा दोगे तुम, वैसे ही पूछोगे थोड़ी ना कि मैं कैसे फायर करूंगा. क्या फायर करने में ना ही तो बोलना है कि हम काम नहीं करेंगे और क्या बोलना है. एग्जैक्टली वही तो वो नहीं बोल पाते. वो कह रहा है बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, शिट यार ये तो कुछ सोच ना गए, ये कुछ कर ना दे. So that's what they have these questions. They hesitate to even talk to them and write an email. We can't work together. Their hands are uh, हाँ, their hands टाइड अप ना. अब shake ये when they do it. ये ना जैसे लाइक आई वर्क विद रिलेशनशिप कोचेस आल्सो, ठीक है. उनके पास ये क्वेश्चन बहुत आता है, लाइक आई एम इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, लाइक आई कैन नॉट लाइक ब्रेक अप, ये वो बताता है कि वो इसलिए Exactly. ब्रेकअप नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियां पूछ ही नहीं रही उनको, कोई कोई और लड़की है ही नहीं. तो जब कोई कोई और है ही नहीं दूसरी. उनको भी पता है. हाँ, बैकअप नहीं मैं है. ब्रेक बैकअप नहीं है ना कोई. तो इसलिए फिर वो सिखाता है कि भाई अबंडेंस में रहो, अप्रोच कैसे करो, ये कैसे करो, लाइक हाउ टू बेसिकली टेक्स्ट इन एवरीथिंग, ताकि तुम्हें पता हो कि ब्रेकअप अगर कर लिया तो लाइक आई हैव समवन हु कैन आई बी विद लाइक इन अ रिलेशनशिप और भी लाइन में है ना. तो ये डर खत्म हो जाता है. नाम में क्या होता है, नाम तो बोल दो यार, लाइक इट इज और क्या ठीक है. एक नवल भाई देखो, अगर फॉर. नवल भाई भी रिलेशनशिप में आएंगे तो उनके पास ऑप्शंस हैं. वो कहेंगे भाई हाँ, पहले ऑप्शन बैकअप फुल रखूंगा हो रहा फिर जाऊंगा. है. क्या भाई अरे बैकअप फिर हाँ. जाऊंगा, तो कोई दिक्कत हो हाँ, तो भाई वापस आ जाऊंगा. और उसको अरे लड़की को भी लगना चाहिए ना कि अरे खड़ी है यार, अभी इसके साथ ही रहना है. वो चिक चिक नहीं करेंगे. वो रहेंगे उस सेफ जोन में. नहीं यार, इसको नहीं छोड़ना, ये तो कहीं और निकल जाएगा. इसको नहीं छोड़ना, ये तो अपनी चौड़ में है. तो चौड़ ओके. चौड़ में रहोगे तो फिर वो क्लाइंट्स भी फिर बिहेव करेंगे. True. So I think just email to the clients, whatever you feel you don't have to work with them. So just email them. They won't be offended. Ask them to find someone. So and write your emails very very क्या कहते हैं, है सही ना, सही ना, गुड प्रोफेशनल. ईमेल लिखना है. हाँ हाँ, हाँ हाँ प्रोफेशनल. हाँ, ऐसे नहीं कि सर प्रोफेशनल वे में सर लिखना है लाइक. अरे लाइट भी. I guess I'm live, guys. You can like ask me some questions if you have. करण की लाइट चली गई, अभी आ जाएगी यार 5 मिनट में. Ask any question, guys. If you have in a comment, we will like keep the ball rolling till Karan comes in.
So Dina is asking, can you please answer this? How to add all social media links in one link using our ClickFunnels link? I don't really like understand what your question is about. To like have social media links on particular like on a page, I like add at the bottom. I usually like do not share any like social media links on a ClickFunnels or any like landing page, because the concept is to have a visitor and then convert them into a paying customer, or basically like have a lead, give them their email list or some kind of that thing. So I do not focus on that. But still, if you can be more specific, that would be great to help me understand what your question is all about. What is the visibility in general? So the Sahil asks, what is the average CPA for taking clients in USA and UK niche digital marketing clients? So if you are like using paid advertising, then the average call per schedule, like people who see your ad and on Facebook, I'm talking about Facebook, people who see your Facebook ad and then schedule a call with you. The range is from like $40 to 100 or like $120. If you are like, if your messaging is not good, then it can go up to like $200 even. If you are using Facebook ads, if you are using paid ads on Google, then it can go up to like $200 to $50, because like digital marketing and in digital marketing niche, the cost per click is high. So that is why if you're using you, I've not used YouTube, so I do not have any idea about that. But it will be a little bit expensive than Facebook ads. If you're using organic, then there is like no CPA, because like you are not spending any money to basically get leads. So if you're, so I believe I have answered your question. If you're using paid ads, what is your average CPA? But it is if you are residing in India, then like organically it is much more preferable if you can like get some friends. Okay, hi Karan. भाई एक तो यहाँ पे यार इंडिया में नेट की प्रॉब्लम कैसे इतनी हो? है क्या करे भाई क्या करे I mean लाइट बहुत बहुत प्रॉब्लम है। आज तो मौसम भी अच्छा है ना, तो ये हो ही जाएगा, बारिश वारिश आ रही है। भाई साहब क्वेश्चन तो रुके नहीं रहे हम्म। अरे थामो भाई एक मिनट this is I think this is a question you have to test out yourself. What will be the average CPA for taking clients in US and UK niche? ये बता दिया। अच्छा बता दिया. How to figure pipeline with leads? What is the process? Again, there are like two methods: organic and paid. Organic, you can use LinkedIn, cold emailing, go to Facebook, impart some knowledge on groups and other things. For paid advertising, if your budget is not very high, use Facebook ads, YouTube ads, and then Google ads. Chronology, is chronology if you don't have good मीम समझ गया so Okay, crazy value. Amazing. Someone has a question. During our early days on LinkedIn, how did you choose whom to send a connection request? So I was very specific. Like I believe in sending connection requests or connecting with only those people who are active on LinkedIn. I do not play any game कि भाई मेरे को 1 लाख या मतलब वो वाला गेम नहीं खेलता मैं कभी भी, ठीक है। मैं मतलब I have a business mindset, तो मैं उसी हिसाब से सोचती हूँ सेल्स में. So I connect with only those people who are active on LinkedIn. I send them a message and then I followed up with a message asking about if they have any problem or anything, start a conversation and book a call with them. Now, currently, what I do, I connect with them. I do not like follow up or anything. I just post content daily and they read my content and they come up to me. Okay, I saw Wow. your content and everything, and I would like to like ask you about your services. Amazing. How do you say find more potential? Okay. How to be really specific on LinkedIn and find more potential people to connect with? So for this, you have to like finalize your vertical first, like who you are going to help. Okay, and then like
filter out people based upon their age, their revenue, their team size, क्योंकि LinkedIn में यही filters available है. If I suggest take a trial of LinkedIn Sales Navigator Sales because marketing. through that you filter out these people and then filter out people who are active on LinkedIn in the past 30 days. Okay? And then connect with those people. So the idea is like उनका vertical, how many team members, how much revenue they are making in particular industry even, and then who are like active on it. Amazing. Okay, there's a question we already answered. Do you stay with? Yeah, he. I mean, now by does Ah, code emailing, right? those का So there's those का. hmm. The way we create interlink where we add all your social media links. How to create the same in ClickFunnels? भाई Yeah. Do you know about this? हाँ वही मतलब 4 लिंक डाल दो ऐसे थोड़ा ब्यूटीफाई करके और उसका मोबाइल वर्जन पे फोकस कर लो और क्या Who लाइक asked this question? कुछ है नहीं. Okay, okay, okay. I think they're using ClickFunnels, right? कुछ है I नहीं. हाँ ClickFunnels में ऐसा फाइनेंस हाँ क्या है? मतलब वही एक एक पता नहीं मतलब ठीक है यूज केस पे डिपेंड करता है Hmm. So do you think ClickFunnels is बट ठीक है overrated? मतलब नो इट like like if the use case is for example मतलब अगर like we have international clients they sell products for example ebooks and workshops and everything so then ClickFunnels is good because we can have order bumps we can have options and everything for Indian scenario it is not very useful you can like page because we cannot like integrate or like Razor Pay, Instamojo, or the like platforms. So in Indian scenario, that works. In international, ClickFunnels works. Hmm. Makes sense. Makes sense. And if you want to basically more, मतलब अगर बहुत सुंदर पेज बनाना है ना, go with Unbounce. Unbounce is the best Correct. like tool that I've Unbounce used. and InstaPage दोनों ही they are Instapage, pretty good. what's it? Uh, Pretty good. they are premium. If you They're premium, but they, premium, you know, are very very good. correct. So correct. So they're basically, enterprise here, but they still sell. Hmm. If your client makes around $10,000 a month, you can easily invest in a good landing page builder, which is Hmm. beautiful. And they have tested everything, and their tests are much more mature than the test which ClickFunnels does because on the pages by Unbounce, वहाँ पे they test a lot of different niches. ClickFunnels में you will see Difference, mostly info yeah. products being tested, but वहाँ पे Info you will products. see Russell वही काम free करता है in ना. correct. So again, that's a funnel रसोई वही office. जैसी राजा वैसी प्रजा वही बात आती है. Correct. So वहाँ पे हम्म, लाइट दोबारा चली गई करेंगे. So guys, ask any questions if you have because it is been like 1 hour 7 minutes. If you have any questions, just comment below. Otherwise, we will wrap up the session in maximum of 10 minutes. Karan will be back in like 5 minutes or so. Ask any question, guys, in the chat if you want to. I'm not really like tested Instagram because who feel like I'm not a social media person. That is why I'm not also like active on Instagram as well. So I'm not tested Instagram, but yeah, people do that. If you are into like if you are a social media marketer who helps them with like social media marketing, design, graphics, and everything, yeah, definitely then it will work. But yeah, I have not really like tested it out. But it works for like many people.
Okay, guys, any other questions? Just let me know, guys, if you have any other questions till the time Karan comes in. Okay. I hope no one heard fuck from me. नहीं अच्छा. चलो Can we then get we will like interrogation with actually what we're doing answers? with हाँ ये आंसर कर दिया हाँ, we will have this correct है. 10 मिनट 10 15 मिनट और करते हैं then we will wrap it up उधर होगी I think, yeah, we so guys if already, you I have any think, questions just let me know okay, we'll take one last question because I think बहुत सारे questions आ गए थे. So anyways, when later, now bhai can also answer it. um, If you have any follow-up question to anything, you can ask later. So because this guy will be available, so बाद maybe you can have, uh, correct. So your question पे आते हैं, when you haven't been able to get results, how yes you yes handle yes that situation? हाँ so ये एक्चुअली जब पहले होता था लाइक व्हेन आई टुक क्लाइंट्स हु वर नॉट रियली डूइंग वेरी वेल इन देयर वर्टिकल ठीक है तो उनको तो रिफंड करना पड़ जाता था नो अदर सोल्यूशन ठीक है अगर आपको इफ यू हैव टू लाइक मेंटेन योर लाइक रिस्पेक्ट एज अ बिजनेस ओनर देन ऑब्वियसली यू शुड हैव such policies of refund but when once I started working with those people who were doing good then they also understood कि marketing में ऐसा हो सकता है that you cannot like get results but still like it is not very ethical for me to like basically like continue working or basically मतलब charge करता रहा उनसे if I'm not able to get the results so my policy is if I'm not able to get you break even I will work for you for free till the time your money is paid back yeah so this is what I do right now this is what Wow. I follow as of now That's very nice. so I you can think do the that's same very good as well for your goodwill, for your future. Mhm. If so, that kind we of course appreciate and even we will refer when he gets results later, and then he's हाँ also मतलब not losing हाँ anything. तो इस हाँ, इससे ये भी होता है लाइक द क्लाइंट मतलब क्लाइंट के सामने यू हैव गुडविल विच इज ऑलवेज मेंटेन इवन आफ्टर यू आर नॉट एबल टू लाइक गेट Correct. रिजल्ट्स मतलब मेरे साथ हो चुका है लाइक उनके रिजल्ट्स नहीं आए बट उनको पता था कि लाइक इनकी नीयत अच्छी है एंड दे वर लाइक रियली रियली लाइक इनटू पुटिंग एफर्ट्स इनटू देयर बिजनेस सो दे स्टिल रेफर्ड अदर पीपल कि इनके पास चले जाओ ये रिजल्ट ले आएंगे उनके नहीं आए बट रेफर करते हैं क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग यू Correct. आर लाइक एथिकल Correct. इन डूइंग बिजनेस Correct. That's why I said in the earlier, when you started the live that you are, I mean, follow the ethical practices of marketing. You're the one who follows it. I know it. I know that as well. So yeah, I think this was a crazy session. People got a lot of value. I've already started getting DMs already. Okay, so this was intense. And Nice, one nice, last, nice. golden statement from you, Navi bhai. Hmm. One last golden statement. What would you recommend? And we'll then wrap it up. Your one statement, which can change someone's life. Oh, अच्छा. अ, इस देखो कोई ना वैसे इसमें ना कोई ड्रीम मतलब कोई वो काम नहीं है कि मतलब तुम 5 से थोड़ी थोड़ी नेटवर्क इशू है थोड़ा. so to थोड़ा नेटवर्क इशू है. यार ये इंडिया में कब ठीक होगा यार नेटवर्क का इशू. लाइट का इशू, नेटवर्क का इशू ब्रो. लाइक
this is something, it should be looked at priority, honestly. Uh, okay. You would wait for 2 minutes. हाँ भाई हेलो हाँ आ गए. हाँ हो गई ओके सो नेट प्रॉब्लम्स लाइट प्रॉब्लम्स नेट प्रॉब्लम्स ऐसे ही चलता ये है कब एजेंसी ठीक बिजनेस भी होगा ऐसे ही ये? चलेगा एजेंसी बिजनेस भी ऐसे ही चलता है तो हाँ तो गोल्डन थिंग इज मतलब पैसे कमाने हैं तो काम करना पड़ेगा ये नहीं होता कि बीच पे बैठे हो और बियर पी रहे हो और पैसे आ रहे हैं अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं. ये नहीं होता कभी भी तो यू हैव टू कोई भी हम्म. मार्केटिंग हो कोई भी कोई तुम फॉलो कर चलो तुम अच्छे मार्केटर्स को फॉलो कर लो फॉलो लाइक रसल ब्रंसन फॉलो फ्रैंकन फॉलो सैम ओवेंस दे वर्क रियली रियली हार्ड मतलब अभी भी ऑल नाइटर्स मारते हैं वो पैसे कमाने हैं काम करना पड़ेगा कोई सोल्यूशन नहीं है इसका ये हटा दो ठीक है ट्रू है भाई. and just productize your services it will make your life easier and then हाँ काम करते रहो इसका कोई सोल्यूशन नहीं ऑल्टरनेटिव नहीं है काम करने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं ठीक है. So I just write the golden statements for people should know stuff. Okay. Work and what? Productize your service. It's very, very important. Like sell it as a product, man. I mean, productize your service. Okay. All right, guys. Hope you have got the statements. Work in product service. There's no I think alternate to this. So hope everyone enjoyed today's session. And Noel bhai, again, thank you so much. You got in and you provided a lot of value. I know you're speaking from experience directly. There's no thing which you have read. सब कुछ जो आ रहा है, you already worked with a lot of people. तो वो experience से ही निकल के आता है. So ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया आने का. आप आए और चार चांद लग गए आज थैंक यू तो सो मच संडे भाई को. बहुत बढ़िया भाई बहुत मजा चलो, आया थैंक यू सो मच. बात करके एंड यू हैव अ नाइस कम्युनिटी एंड नाइस पीपल so thank you so much guys have a good night it was like great talking with you गुड Karan नाइट. and with चलो the भाई. people of this community thank you so much good night guys चलो, bye सी एवरीवन. ciao टेक केयर. बाय बाय.